Tala and Sanju are on the debate. Tala and Sanju. BJP represents intolerance of Nathuram Godse. Who is she? Who is this Godsewadi sitting here? Arnab, either you have a sensible debate or don't call me with these Maulanas, Mullahs, Imams who don't even have basic decency. एक sensible debate हो रही है. The debate should go back. Can I be on air, please? Otherwise, I can't anchor the debate, Sharad. I'll tell you one thing, Tala and Sanju. Let us go back. अच्छा ठीक है, आप गोडसेवादी बोलेंगे, आप जिहादी बोलेंगे. I'll go back to the basic point. You see, we are one minute. I just want 10 seconds, Sanju. The issue today is that just before the elections, the Congress party obviously wants the Muslim vote and is going all out by now even promising Muslim quota. Nothing wrong. I am saying tonight, if a Hindu is watching the program, he will say this is a Muslim party. There's no difference between Rahul Gandhi and Owaisi. Rahul Gandhi is more radical than Owaisi, that's all. So Sanju is, after Sanju you come. Tala, one after the other. Let Sanju speak, then you come. Okay, thank you. Yeah, Sanju. Okay. You know, Arnab, first and foremost, I also want to first speak in favor of the Muslim community. चलो मान लेते हैं BJP does not favor Muslims. कांग्रेस तो कहती है मुसलमानों को फेवर करते हैं. Today in Lok Sabha, in the 18th Lok Sabha, we just have 24 Muslim MPs. Lok Sabha 2019 में there were 26 Muslim MPs. In Lok Sabha 2019, tickets were given to 119 Muslim candidates. This time tickets were given in Lok Sabha 2024 to only 78 Muslim candidates. चलो बीजेपी मुसलमानों के साथ नहीं है, कांग्रेस तो है, समाजवादी पार्टी तो है, टीएमसी तो है, तो आप लोगों ने सिर्फ 78 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट्स क्यों दी? रेवंत रेड्डी मुसलमानों के बारे में दुहाई देते हुए कहते हैं मैं इनका करता धरता हूं, तो मुसलमानों को भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, इंक्लूडिंग तला रशीदी. आज तेलंगाना में कांग्रेस हैज 64 एमएलए आउट ऑफ 119. 119 में से 64 एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं तेलंगाना में, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है. टुडे देयर आर 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स. 17 लोग हैं रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में, 17 लोगों में से एक भी मुसलमान नहीं है. तो पहली बात तो कांग्रेस को समझना होगा दैट मुस्लिम्स को कांग्रेस इज टेकिंग फॉर अ रॉयल राइड. ये सिर्फ मुसलमानों को बरगलाते हैं, वो भी चुनाव के वक्त. Now let me give you some important statistics. Basically what Uddhav Thackeray said. This is very quickly in 20 seconds. Today in Maharashtra, 13% reservation is for Dalits, scheduled castes, 7% for Adivasis as in scheduled tribes, 19%, 19% for OBCs, 2% for special backward classes, 3% for Vimukta Janjati, 2.5% for nomadic tribe B, 3.5% for nomadic tribe C, and 2% for nomadic tribe D, bringing the grand total to 52%. Uddhav Thackeray was asked by a local daily कि महाराष्ट्र में already 52% upper limit has been reached without breaching the Supreme Court verdict. You cannot give 10% reservation to Muslims. आप तो 4-5% भी नहीं दे पाएंगे, आप 10% की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों को झूठ क्यों बोलते हैं? उद्धव ठाकरे सर, वो चुनाव के बाद देखा जाएगा.